Hello everyone, I am Rakshi Garg and is here with you for a very short yet important topic from GST, that is composite and mixed supplies. So let's move forward. Section 8 of the CGST Act 2017 states about composite and mixed supplies. As we all know, if we avail any goods or services, we need to pay GST over it. If goods or services are supplied individually, यानी कि एक एक करके सप्लाई किया जा रहा है, then it is easier to determine the rate at which GST to be paid. But what if two goods or two supplies are mixed or bundled up and they are provided as a single supply? This bundle up or combination can be served in two ways, that is through the way of composite supplies or through the way of mixed supplies. Let's see what composite supplies are. The definition says when two or more taxable supplies of goods or services which are naturally bundled and supplied in conjunction, one of which is a principal supply. Let's understand the meaning of this. First term is two or more combination. That is when two goods or two services are combined for a single supply. Then the term is naturally bundled. Now understand what naturally bundled means. If we see from the perception of a receiver, then the receiver expects कि दो goods जो साथ में combine किए गए हैं या bundle up किए गए हैं वो naturally साथ में ही मिलेंगे. Let's take an example. If we went out to purchase a mobile phone, then we expect कि उसके साथ उसका charger आएगा ही. Or else, majority of suppliers in such sectors provide similar bundle of services. Like if we see in the medical sector, every hospital have its own dispensaries. जहाँ हमें इजीली सारी रिक्वायर्ड मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है. और इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड दैट इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई इज रिमूव्ड देन द नेचर ऑफ द सप्लाई इज इफेक्टेड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ सीलिंग फैन इज served without its wings or blades, then it is of no use. Then supply का nature effect हो रहा है. That is composite supply. And the last term is the principal supply. Principal supply को explain करने के लिए let's take an example of an educational institute which is providing teaching services and books, uniform and online classes along with it. So here principal supply is teaching services and the rest supplies are complementary with it. When this type of combination is made, then tax liability is on the rate of principal supplies. यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई पर जो रेट एप्लीकेबल है जीएसटी का उस रेट से हमें टैक्स पे करने की नीड है. द नेक्स्ट इज मिक्स सप्लाईज. Let's move to its definition. Definition says when two or more individual supplies of goods or services made in conjunction with a single supply. Let's find out its term first. When two or more goods or services are combined together. Those are individual supplies, यानी कि हम उन्हें अलग अलग या separate भी सर्व कर सकते हैं. And here no principal supply can be detected. And जो रिसीवर है वो इसके लिए एक सिंगल कंसिडरेशन पे करता है, यानी कि दो सर्विसेज जो हमने कंबाइन की है उनके लिए हम सेपरेट सेपरेट चार्ज नहीं करते हैं, उन दोनों का एक कंबाइंड कंसिडरेशन वी चार्ज फ्रॉम कस्टमर. एंड दीज सर्विसेज और गुड्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, यानी कि अलग अलग भी रिसीवर इनको डिमांड कर सकता है एंड सेपरेट जो कॉम्बिनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी परचेज कर सकता है. नाउ व्हाट नॉट नेचुरली बंडल्ड मीन्स two supplies which are provided together can be made separate too. Let's take an example. Festivals time पे जो celebration hampers available होते हैं that combines of sweets, chocolates, aerated drinks and fruit juice, जो कि normal days में हम अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं. तो in this case tax liability जो अराइज होगी वो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स पे अप्लाई होगा, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है उसमें से जिस सप्लाई पे हाईएस्ट टैक्स रेट होता है जीएसटी का उस रेट से हमें जीएसटी पे करना होगा.